A warm good afternoon to all of you who have joined us online for a session on spinal cord injury. Now, as we go, a single moment can change a life, but awareness and inclusion can change the future. With this, we will be starting. So, good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you on this special occasion where we have come together to observe the International Spinal Cord Injury Day. Every year, the 5th of September reminds us of not only the challenges which are faced by the spinal cord injured, but also of their incredible strength, resilience, and determination. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, रोकथाम को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, समान अवसर और सामाजिक समावेशन दिलाना. With this motto, we'll start our panel discussion today. In our panel, we have all esteemed panelists, which include we'll have policymakers, we have spine surgeons, we have rehab professionals. As we go through the panel discussion, I'll be introducing them. ISIC takes pride in its world-class spine surgeons whose vision and dedication have made it a center of excellence. Leading the team is Dr. Kalidatta Das, Director and Chief of Spine Services, guiding the department with unmatched expertise. Along with him, we have Dr. Vikas Tandon, Director of Spine Services, known for his commitment and pioneering contributions in spinal care. Supporting his leadership, we have Dr. Ankur Nanda, Associate Director of Spine Services, who will bring depth of knowledge and clinical acumen to the team. Strengthening the foundation further, we have Senior Consultant Dr. Bansal and Dr. Neeraj Gupta, each adding invaluable experience, precision, and patient-centric care to ISIC's spine program. Together, this team embodies excellence, collaboration, and innovation in spine services. So, we'll start today's panel discussion understanding कि spinal cord injury होती क्या है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ये क्यों होती है. तो पहले हम क्यों से शुरू करते हैं. The first question I would like to ask Dr. Kalidatta Das. Sir, could you share us what are the main preventable and non-preventable, जो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, the causes of spinal cord injury? Thank you, Sambhavi, and thanks to the panel and the initiative of Indian Spinal taking this step to digitize the awareness and understanding of the importance of spinal cord injury. मेरे जो ये प्रश्न का उत्तर होगा इसमें कुछ हिंदी की शब्द जो मेरे को नहीं आएगा उसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हम मेरु है और मेरुदंड की जो नसें हैं उसको स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड हम बोलते हैं. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज़ अ वन वे ट्रैफिक. बहुत कम लोग हैं जो लकी होते हैं जिनकी नस चोट खाने के बावजूद वो फिर रिकवर करते हैं. रिकवरी भी करीबन 1 लाख में एक आदमी रिकवर करता है टोटली, जिस ग्रेडिंग के हिसाब से हम कहते हैं कि एशिया डी या एशिया ई बन जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज सम रेसिडुअल डिफेक्ट्स दैट स्टे बाय. सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आम इंजरी की तरह नहीं है जिसमें कुछ समय में गोली दवाई ऑपरेशन एंटीबायोटिक से आदमी पूरी तरह से 100% हेल्दी या सुरक्षित हो जाती है. उसीलिए हम हमारी स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी समझना और उसकी महत्वपूर्ण और उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करना बहुत अनिवार्य है. एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? So second part was how can we prevent it? What are the preventable causes? हर चीज का कुछ प्रिवेंटेबल एंड नॉन प्रिवेंटेबल कॉजेज होते हैं. प्रिवेंटेबल जो है हमारे हाथ में है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स.
fall from heights. So कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिसके दरमियान अगर हम अपनी कार्य करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या अपनी देखभाल करते हैं, ऊंचाई पे हम जब जाते हैं, ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं. बट एज डिफाइंड एक्सीडेंट्स किसी के कंट्रोल या प्रेडिक्टेबिलिटी में नहीं है. सो एक्सीडेंट्स आर समथिंग वेयर यू कैन ओनली डू अ प्रोफिलैक्सिस और you can take care to a certain extent. These are among the non-preventable causes which are imminent in its nature, which we call misfortunate or accidents. The conditions that we have under our control is slip, fall, taking precautions, adding anti-skid mats, holding barriers. These are the ways we can prevent a fall. So fall in the geriatric or the elderly age group is as important as creating a spine injury, and because of the fragility, they are more prone for spinal cord injury. Thank you, sir. We got a good insight about this. As sir said, falls are a major problem. गिर जाना, जैसे कोई भी एल्डरलीज हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, देयर आर चांसेस कि वो गिर जाते हैं. एंड एट टाइम्स हमें क्या लगता है, अच्छा ठीक है गिर गए, वी नीड नॉट कम टू द हॉस्पिटल. बट एट टाइम्स बड़ी छोटी सी चोट कैन बी लीडिंग टू अ फ्रैक्चर, और वो अगर सही टाइम पे हम आ जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, तो काफ़ी फायदा होता है उस पेशेंट को, एंड वी कैन गेट द राइट ट्रीटमेंट डन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू डॉक्टर विकास टंडन. सर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंजरी हो जाती है, उसके बाद हर पेशेंट आपसे भी पूछता है कि सर हम ठीक कैसे होंगे. ठीक है, ये ठीक होने की कौन कौन से फैक्टर्स हैं. एज वी फ्रॉम द फ्रेटर्निटी वी नो कि क्या फैक्टर्स हैं, बट हर किसी को लगता है कि आज चोट लग गई, मैं कल से चलने लगूंगा या लगूंगी. बट हमारी रिकवरी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनका योगदान है. थैंक यू शाम्भी. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी रिकवरी में आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इज बेसिकली वेदर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट इज हैपेंड इज अ कंप्लीट इंजरी और एन इनकम्प्लीट इंजरी. नाउ कंप्लीट इंजरी ऐसी इंजरी होती है जिसमें जो फ्रैक्चर हुआ है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे ऐसी चोट लगी है जो कि नीचे के हिस्से को, अगर वो गर्दन में लगी है तो आपके दोनों हाथ, दोनों पैर और आपका यूरिन और स्टूल का कंट्रोल, ये सब चला जाता है. और उस चोट लगने के लेवल के नीचे कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती. इसको हम कंप्लीट इंजरी बोलते हैं. बाकी इंजरीज ऐसी होती है जिनमें इनकम्प्लीट होती है कि फ्रैक्चर होने के लेवल के नीचे कुछ मूवमेंट या आपकी सेंसेशंस इंटैक्ट है, यानी कि कुछ बची हैं, वो इनकम्प्लीट इंजरीज होती हैं. सो द मेजर फैक्टर विच डिक्टेट्स कि आपकी रिकवरी कैसे होगी और कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट इंजरी है. इनकम्प्लीट इंजरी के जो प्रोग्नोसिस है या जो ठीक होने की जो संभावना है वो काफ़ी अच्छी होती है. और इनकम्प्लीट इंजरीज को भी हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं. जैसे कि डॉक्टर दास ने शुरुआत में एशिया स्कोरिंग के बारे में बात किया था, या एआई स्कोरिंग के बात किया था. उसके अंदर स्कोरिंग जो होती है वो ए से लेके ई तक होती है. जो ए कैटेगरी है वो कंप्लीट इंजरी में माना जाता है, जिसकी प्रोग्नोसिस in terms of spinal cord recovery is not very great. But the incomplete from B, C, D and E, these patients do very well, and obviously the prognosis is better as you go down the ladder. अगर आपका कैटेगरी C, D या E में आते हैं तो प्रोग्नोसिस आपकी और बेहतर होती है. सो आई थिंक दिस इज द मेजर थिंग जिस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कैसे होती है. टाइम वाइज इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेयर ऑन द लैडर यू आर, वेदर यू आर अ बी कैटेगरी की पेशेंट और अ ई कैटेगरी पेशेंट. थैंक यू. थैंक यू सर. हम लोग ये पेशेंट को डेफिनेटली समझाते हैं उनकी रिकवरी कैसे इनकम्प्लीट, और इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का फंक्शनल आउटकम क्या रहेगा. अब तो हमने प्रिवेंटेबल कॉजेज जान ली, इंजरी की वो जान ली, पर इंजरी होती किस लिए है. अगर हम आंकड़ों पे देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी करने के लिए. हम सब ने कभी ना कभी रास्ते पे एक्सीडेंट देखा है. वी आर सो सेंसिटाइज बीइंग वर्किंग हियर एट ISIC, हम पहली चीज देखेंगे कि वहां से बंदा ट्रांसफर ठीक से हो. पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम क्या देख रहे होते हैं, आधी लोग आज की जनता में सेल्फी ले रही होती है विक्टिम के साथ, या फिर उसको खींचतान की जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम जागरूकता फैलाने के लिए या अवेयरनेस के लिए करना चाहते हैं, सो दैट सारी
पब्लिक को पता चले कि सेफ्टी बहुत जरूरी है जब ट्रांसफर्स करें। और इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डॉक्टर अंकुर से पूछना चाहेंगे। सर, accidents often happen in public places. How can we make the general public aware on-site management and why that referral to a specialized spinal cord injury center is required at that time? शाम्भवी जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने कई बार जब मरीज़ को हम अपनी इमरजेंसी में देखते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि चोट लगने के बाद तो वो पैर कुछ हिला पा रहे थे या हाथों में मूवमेंट थी, पर ट्रांजिट के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया होता है कि धीरे धीरे उनकी मूवमेंट चली गई है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि जब भी इंडिया में जब भी एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब जो पहले एक्सीडेंट की जगह पे आकर मदद करे, वेस्टर्न वर्ल्ड में यूजुअली वो रेस्क्यू सर्विसेज या एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं। और हमारे देश में 95% केसेस में रिलेटिव्स या आसपास जो लोग चल रहे हैं वो होते हैं। और जब भी एक्सीडेंट होता है बड़ा अफरा तफरी का माहौल होता है, सब मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कोई नहीं जानता कि कैसे मदद करनी है। और अमूमन देखा गया है कि मरीज को हाथों से या पैरों से पकड़कर या कमर से पकड़कर, पेट से पकड़कर उठाया जा रहा होता है। सो मैं आज ये इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, मरीज को जब भी चोट लगे आप उसे उठाने की कोशिश ना करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी गर्दन और सिर को पहले स्टेबलाइज किया जाए और उसके पीछे कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी चीज़ हमारे पास हो जो कि हम पीछे रख सकें, उस सरफेस पे ही उठाना चाहिए। सो हमारा पहला कदम होना चाहिए कि पहले हम चेक करें कि वो सांस ले रहे हैं, कोई मुंह में या नाक में कोई चीज़ फंसी ना हो। उन्हें गर्दन और सिर को बिल्कुल स्टेबल करें अपने हाथों से, और जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस या पुलिस की मदद लें। अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ ये नहीं हो सकता तो फ्लैट सरफेस पे लिटा कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी मरीज़ को उस समय पानी पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मरीज़ हो सकता है बेहोशी की हालत में जा रहा हो और पानी फेफड़ों में जा सकता है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी ऐसे सेंटर में जाएं जहां स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ट्रीट होती है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो मरीज़ होते हैं इनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। और जो लोकल या रीजनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें शायद ये तकनीक और एक्सपर्टाइज अवेलेबल ना हो। इसलिए बेहतर ये है कि जितना जल्दी हो सके इन मरीज़ों को एक टर्शरी केयर सेंटर जो स्पाइनल इंजरी से डील करता है, जिन्हें इनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी है, वो दें। क्योंकि देखिए, एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है कि जितना मरीज़ को जल्दी स्टेबलाइज किया जाए, जितना नसों से प्रेशर जल्दी हटाया जाए, रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। इसलिए हम यही संदेश फैलाना चाहते हैं कि आप एक्सीडेंट साइट पे बिल्कुल मरीज़ को उठाने की कोशिश ना करें, प्रोफेशनल हेल्प बुलाने की कोशिश करें। नहीं हो सकता तो उन्हें लेटी हुई अवस्था में ट्रांसफ़र करें और स्पेशलाइज्ड टर्शरी सेंटर पे पहुंचाएं, ताकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे रहें। थैंक यू सर। इसी क्वेश्चन को आगे लेते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर गुरुराज से होगा। सर ने जैसे, डॉक्टर अंकुर ने जैसे कहा कि वी शुड बी ट्रांसफरिंग द पेशेंट ऑन अ फ्लैट सरफेस। नाउ सर, प्रैक्टिकली हमारे आइडियली वी नो स्पाइन बोर्ड्स होने चाहिए, बट इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितनी होती है? और दूसरी चीज, अगर ये नहीं अवेलेबल हो, एक भी जागरूक नागरिक वहां हो, तो उसको हम फ्लैट सरफेस के लिए वो क्या कर सकता है इन केस स्पाइन बोर्ड ना हो? स्पाइन बोर्ड हो तो उसकी क्या यूटिलिटी है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की, अगर स्पाइन बोर्ड ना हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? यस, अभी जैसे अभी तक हमने डिस्कशन किया, तो अल्टीमेटली हम पेशेंट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या हम साइट ऑफ एक्सीडेंट से पेशेंट को कैसे निकालते हैं और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सेंटर में कैसे पहुंचाते हैं, इससे ये डिटरमाइन होता है कि अल्टीमेटली वो पेशेंट आगे चल के चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे तो मरीज़ के हाथ पैर चल रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसके हाथ पैर कंप्लीटली चलना बंद हो गया होता है। तो मरीज़ एक तरीके से इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वापस रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो इसलिए होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है, तो दो इंसर्ट्स यानी दो उस पर चोट
लगते हैं। एक प्राइमरी इंसर्ट बोलते हैं, एक सेकेंडरी इंसर्ट होता है। एक प्राइमरी इंसर्ट जो है वो जो एक्सीडेंट के दौरान इमीडिएटली हो गया है, और जो सेकेंडरी इंसर्ट वो है जो हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करने में, पेशेंट को उठाने में, पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के दौरान हम मरीज को कैसे हिलाते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, उसके कारण जो सेकेंडरी इंजुरीज होते हैं उसको सेकेंडरी इंसर्ट बोलते हैं। तो प्राइमरी इंसर्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इंसर्ट ना हो, सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी ना हो, ये हम स्पाइनल बोर्ड के यूसेज से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पाइनल बोर्ड क्या है? एक ये फ्लैट सरफेस है जिसको हम मरीज के नीचे स्कूप करके उसको सर से लेके नीचे पैर तक एक साथ में मरीज को हम उठा सकते हैं, ताकि हमारा स्पाइन एज अ यूनिट, मतलब सर से लेके टेल बोन तक एक साथ में मोबिलाइज हो जाए। क्या होता है कि जैसे डॉक्टर अंकुर अभी समझा रहे थे कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स इंडिया में ऑलवेज बाईस्टैंडर्स और आसपास में जाने वाले लोग होते हैं, एंड इंडिया में ऑलवेज पीपल आर वेरी हेल्पफुल, दे ट्राई टू हेल्प। बट देन क्या होता है कि आपने देखा होगा, सारे आप टीवी में भी देखते हैं, लोगों को हम गनी बैग के जैसे, एक हाथ पकड़ रहा है एक पैर पकड़ रहा है, ऐसे गनी बैग के जैसे उठा के लेके जा रहे हैं। इससे क्या हो जाता है? स्पाइन बेंड हो जाता है, और जहां पे हड्डी टूटी हुई है और वो और टूट जाता है, नस के ऊपर दबाव है और दबाव बढ़ जाता है, तो एक तरीके से नस का इंजुरी और बढ़ जाता है। तो इसलिए स्पाइनल बोर्ड होना बहुत जरूरी है। इन केस हमें लगता है इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा स्पेशलिस्ट टीम या एम्बुलेंस आए, क्योंकि इन एक्सीडेंट्स में हो सकता है पेशेंट की सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, हमने जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, हो सकता है उसका लाइफ ही रिस्क में हो, तो एक 4 मैन लिफ्ट टेक्निक करके होता है, एटलीस्ट 3 से 4 लोग चाहिए इसके लिए। एक अपने सर और नेक को स्टेबलाइज करे, एक बंदा पूरा हमारे धड़ जो बॉडी है, बॉडी पार्ट को स्टेबलाइज करे, एक बंदा हमारे पूरे पैर को करे, एंड एट द काउंट ऑफ 3 सारे एक साथ में मरीज को एज अ यूनिट एक साथ में उठाएंगे और उनको ट्रांसफर करेंगे। और ये एक जगह नहीं, टिल पेशेंट रीचेस द डेफिनेटिव सेंटर, वहां पे ट्रीटमेंट शुरू होने तक भी हमें ये टेक केयर करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो अगर मैंने सही समझा तो आधे टाइम पे हम काफ़ी इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सही तरीके से ट्रांसफ़र हो और सही सेंटर पे पहुंचे, सो दैट जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होके आए उससे पहले हम काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर बंसल के लिए लूँगी। सर, जैसे हम जानते हैं कि फॉल्स अब बहुत कॉमन है कि हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं जो वॉशरूम चले गए, स्लिप हो गए, उठ के बैठ गए, फिर आ गए, और वो आके बोलते कि हल्की सी दर्द है, या फिर बोला कि मुझे टर्न करने में दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे हम क्या डिसीजन ले कि हमें कब आना चाहिए? इज दैट द फॉल विच इज ऑफ कंसर्न, सो दैट आगे कोई प्रॉब्लम ना हो? ये जो है इसकी जागरूकता हम कैसे फैलाएं? बिकॉज धीरे धीरे हमारे कंट्री में जो एल्डरली पॉपुलेशन हो रही है वो बढ़ती जा रही है। सो हाउ डू वी डू दैट, सर? थैंक यू। Thank you, Sambhavi, for question. मोस्ट ऑफ द इंजरीज जो गिरने से जो चोट लगती है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके लिए आपको घर में बहुत सुरक्षित माहौल या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। जैसे आपने बात की बुजुर्गों के गिरने से चोट लगने की, तो उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि बाथरूम में ऐसी टाइल्स हों जो स्लिपरी ना हो, उनको कुछ होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ है ना रेलिंग या कुछ वो लगा दिए जाएं जिससे कि वो यदि इम्बैलेंस हो तो उसको पकड़ सकें। सीढ़ियों में रेलिंग हो, होल्डिंग रेलिंग हो जिसको वो पकड़ सकें। मैट्स हों जो उनके पैरों में उलझे नहीं, कम से कम जो वो जब चलते टाइम पैरों में उलझने से गिर सकते हैं। लाइटिंग प्रॉपर हो। इन सब ये छोटे छोटे मेजर्स लेके आप है ना ये बहुत सारे इंसिडेंसेस को बचा सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो गिरने से जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो एक बहुत मेजर कारण है हमारे इंडिया में, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो उसमें गिरने से जो चोट लगती है
उसमें बहुत सारे तरीके हैं जिनसे गिरते हैं लोग, पेड़ों से गिरने से, अनप्रोटेक्टेड बालकनी या रूफटॉप जहाँ पे पैरापेट वॉल नहीं है या बालकनी में रेलिंग्स नहीं है, उनसे गिरने से। तो यदि इन सब का ध्यान रखा जाए तो इन इंजरीज को बचाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनप्रोटेक्टेड सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं या पूरी तरह से उनका पालन नहीं किया जा रहा है, अन नेट्स नहीं है जिनसे लोग गिरते हैं और इस तरह की इंजरीज होती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके हम बहुत सारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को बचाया जा सकता है। थैंक यू सर। एक छोटा सा हम बीच में आई वुड लाइक टू से कि हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, ये एक बहुत बड़े विजनरी का विजन है जो आज हम सब जी रहे हैं एज पीपल हु प्रोवाइड केयर। और आज हम सारे जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी पेशेंट्स यहाँ ट्रीट होते हैं, ये उनका विजन का नतीजा है। मेजर एचपीएस आलोवालिया जो हमारे चेयरमैन सर थे, जिनके विजन से आज यहाँ ये सेंटर खड़ा हुआ है। एंड इट गिव्स मी अ इमेंस प्राइड कि द मोस्ट फिटिंग पर्सन टू बी कॉल्ड to take is the torch bearer of Major HPS Ahluvalia's dream, and we call upon our Chief Strategy Officer Sugandh ma'am on the stage to tell us about the dream and how it goes. Ma'am, please welcome. Ma'am, we are living the vision. We have grown with this vision, and I would like to know for people to understand what was the vision, which I think majority of us here we know, but we would like the audience to know that why the legacy of Major H.P. Sullivan and his idea of setting up a specialized spinal cord injury center here, and how is this hospital planning to carry out his legacy forward? So this is going to be a bit of a longish answer, so I would like everyone to bear with me. I would like to go back to when Pa passed away in 2022, and the way the board and the organization, including the doctors sitting here, they rallied again, like around Mom, to be the torchbearer for the future. That was very promising, and nobody could have thought of a better fit than her to take over as a successor. So it starts from there, and I worked with my father, I worked with my mother, and I feel because she was always in the background, many people did not think that she would be successful, but she's really turned around the organization, and we are very proud of her for the work that she's doing in terms of carrying forward his legacy. Then, obviously, the gents sitting here, uh, no doctor left ISIC after Pa was gone. And that itself gave us the encouragement, the assurance that they have confidence in us and the way that we will lead in the future. Now, as far as carrying the legacy forward, I've said this, I remember last year as well, when Ankur had interviewed me, that it's a very sensitive balance of the old and new. So, from the new aspect, my dad was very, very fond of his staff. He used to know all the gossips about most of the households happening. And so this year we've launched a very extensive employee wellness program, which we are calling Anantam, and it's going to address mental health issues. So that is one way of carrying his legacy forward, ensuring that the staff who serves as a backbone to the hospital is well looked after. Secondly, there are also infrastructural changes happening within the organization. At the end of the day, we are 25 years old, and slowly change is coming. We don't want it to be drastic because we don't want people to feel that we are moving away from his vision or his ideas. So we are trying to modernize ourselves by making small infrastructural changes and also moving towards
AI digitization, because that's the future. So sustainability is something that came forward after mom and I became more involved with the organization, and that's what we are working towards. Um, Also, the community we serve, the Vasant Kunj community, was very close to Pa. They used to meet him regularly. Whenever they had a complaint, they felt um it right to walk straight up to him and complain about it, and he was all ears. So our endeavor is to become the neighborhood friendly hospital for the Vasant Kunj community. So for that, we're enhancing our ancillary services. We are adding gastroenterology. We've started dialysis on our own. We have a full CTVS and a cardiac sciences unit, which is doing really well. Um, and down the line, there's a new ER coming up. So all these small things are carrying his legacy forward based on the thoughts and feelings he had. And lastly, um, because I have it in my DNA, I can't help it, much to the dismay of Dr. Ashish Chandra and the finance department. Um we are kind of introducing a lot of CSR initiatives, which I will come to when you address SCI specifically. Right? Thanks. Thank you, ma'am. I would like to say that ISIC is a to-go hospital for almost 50% of Delhi, where we come and get the good care. Taking it further, we'll have the next question with Dr. Neeraj. Sir, as ma'am said, it's a holistic care what we give here in spinal cord injury. Now, as a surgeon, what are your ideology about these holistic care for a spinal cord injured patient? Thank you, Shambhavi, for this question. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस माध्यम से आज हम समझना चाहेंगे होलिस्टिक केयर है क्या. व्हाट इज़ होलिस्टिक केयर? तो हमारे पास कोई भी अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट आता है तो हम उनसे कहते हैं आपको दो लड़ाई लड़नी. एक लड़ाई तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की और दूसरी लड़ाई उसके बाद शुरू होगी. तो वो चीज़ हमको समझनी है और वो चीज़ खाली जो समाज को नहीं समझनी, अस्पतालों को भी समझनी है, डॉक्टर्स को भी समझनी है. आज हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ISIC इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर्स जहाँ पे होलिस्टिक केयर होता है. लेकिन जो जो हमारे जो मेडिकल समाज है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, सोशल लोगों को होलिस्टिक केयर के बारे में पता ही नहीं है. अधिकतर लोग समझते हैं कि तो सो स्पाइन सर्जरी इज मच मोर देन हीलिंग बोन्स, कि आपने ऑपरेशन कर दिया तो दैट डजंट मीन दैट कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है, जो पेशेंट जो है वो अब ठीक हो गया. तो सेकंड जो उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है होलिस्टिक केयर. ही नीड्स मच मोर देन दैट. तो उसके लिए सेंटर्स, देयर आर वेरी फ्यू सेंटर्स इन होल साउथ ईस्ट एशिया, एंड आई एम प्राउड टू से दैट इंडियन स्पाइनल इंजरी इज अमंग्स दैट सेंटर. तो होलिस्टिक केयर में होता है, सबसे पहले होता है कि जब एक बार पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, उसके बाद सबसे पहले कहते हैं इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल उसको नीड्स जो होती हैं. किसी भी इंसान के लिए ये समझ पाना कि वो अब जो है वो अब चल नहीं पाएगा या वो बैठ नहीं पाएगा, इट गिव्स ए लॉट ऑफ, उसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है उस चीज़ को, उस चीज़ से उभर ही नहीं पाता है. और ना उसमें खाली पेशेंट नहीं है, पेशेंट्स के अलावा फैमिली को भी ये चीज़ एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है. सो पेशेंट नीड्स साइकोलॉजिकल, देयर इज लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन which is to be given to the patient. So this is one aspect. Second aspect कि अगर हम जो यहाँ पर वोकेशनल नीड्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, वी आर जो इंडिया, हमारी जो कंपनी, जो हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया कंट्री के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर यंग पेशेंट्स. दे आर द होल, जो आपका फैमिली चला रहे हैं, फैमिली चला रहे, जो आदमी एक फैमिली चला रहा है और उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, तो होल फैमिली हैव टू बियर द लॉस. सो फाइनेंशियल जो उसको रिहेबिलिटेशन करना है, और जब वो यहाँ पर ऐसे सेंटर्स में आते हैं, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर्स, तो वी प्रोवाइड देम ऑल दिस थिंग, वी गिव देम द रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, देन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन. किस तरीके से आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, वी गिव देम ट्रेनिंग. वी हैव गॉट, अभी जैसे मैम ने बताया कि अभी आने वाले टाइम में जैसे हमारे पास AI है, रोबोटिक्स है, वी ट्राई टू मेक देम किस तरीके से अपने हाथों को डिफरेंट टेक्निक्स से वो यूज़ कर सकते हैं. देयर पीयर काउंसलर्स आर देयर. जब वो अपने जैसे लोगों को और लोगों को देखते हैं
तो अब देखते हैं कि हाँ मेरे जैसे और लोग भी हैं और वो खुश हैं, अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे होंगी? ऑल दीज रिक्वायर्ड, दिस इज होलिस्टिक केयर। और ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑपरेशन हुआ और फिजियोथेरेपी को रिहैब समझा जाता है। फिजियोथेरेपी समथिंग डिफरेंट। क्या आप खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं जो कि नहीं पता। सेक्सुअल रिहेबिलिटेशन, जैसे मैंने बोला, यंग 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 मेल्स हैं, यंग फीमेल्स जिनको हो रही है, एंड फैमिली कैसे पूरी होगी, कैसे करना है, क्या करना है, किसी को नहीं पता। तो all these things needs a holistic care, and Indian Spinal Injury Center is geared up for that, and is one of the centers in whole Southeast Asia जो कि ये सब चीज हम लोग इस चीज को हम लोग ध्यान रखते हैं और हम इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Um, what we know that medical profession is advancing every day. So my next question will be to Dr. Tarush. You might have come across many patients asking you, "Sir, नया क्या है? नई चीज क्या हो सकती है?" Now, with advancement of people's access to internet and information, they might come up with various techniques they would have read. So, what is the new technique which is safe and what we can do for the spinal cord injured? सो फ्रॉम अ पेशेंट पर्सपेक्टिव इट इज़ डिफरेंट, बट एक दृष्टिकोण अगर आप इंडिया का दृष्टिकोण ले तो ये सवाल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि यही सवाल अगर आप कनाडा यूएसए में पूछेंगे तो नया ये होगा कि किस तरह से हम हेलीकॉप्टर से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करें, वो हमारा मिसिंग हो रहा है। वो सब चीज़ों के लिए अभी बहुत दूर है हम लोग। सो अभी जो रिसेंट एडवांसेस जो हमारे देश के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे टीयर 2 सिटीज़ हैं, टीयर 2 सिटीज़ में अभी इसका अवेयरनेस जो है वो बढ़ रहा है इसी प्रोग्राम्स के माध्यम से। जो हम फेलोज जो ट्रेनिंग होती है, 2 अलग अलग शहरों में जाके प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। वो एक एडवांसमेंट हम लोग मान सकते हैं। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जैसे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर पहुंचते हैं, सर्जरी के अंदर कुछ एडवांसमेंट्स हुए हैं, नेविगेशन सर्जरी है, रोबोटिक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में और मदद कर सकती हैं। रिहैबिलिटेशन के बहुत नए उपकरण जो हैं अवेलेबल हैं, एक्सोस्केलेटन रोबोटिक्स, जो कि पेशेंट को एक नई ज़िंदगी प्रदान कर सकते हैं, जो उनको बहुत एडवांस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर गुलाटी उसके बारे में बात भी करेंगे। और अंत में जैसे डॉक्टर नीरज ने बोला, होलिस्टिक केयर भी, उसमें भी एडवांसमेंट हुई है। जैसे काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों में बहुत एडवांसमेंट हुई है। हाँ, कुछ पेशेंट ज़रूर ऐसा पूछते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या ये इंडिया में अवेलेबल है, और ऐसे सवाल पूछते हैं, और हम उनको काफ़ी साइंटिफिकली तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं कि ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं ये इस वक्त एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही हैं। सो किसी पेशेंट को ये बोलना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद स्टेम सेल थेरेपी से वो ठीक हो जाएंगे, ये एक्चुअली एक गलत दृष्टिकोण है, क्योंकि ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे हैं। सो एडवांसमेंट हो रही है धीरे धीरे, बट आप किससे पूछेंगे, जब आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज़ अनदर वे फॉरवर्ड, तो आप आगे बढ़ते रहना, इसमें कोई अंत नहीं है बेसिकली। थैंक यू। Thank you, Dr. Tarush. Our next distinguished panelist is Dr. Ashish Chandra, Chief Operating Officer. As we know, as Sugandh ma'am said, that we are expanding, we are improving. So under his leadership and operational vision, we have foot forward. So with that vision, I would like to ask Sir, that's how, when we talk about medical facilities, how are we ensuring that we maintain, what the ISIC is maintaining the quality standards, and what is today, like how we have made it as a state of art facility for spinal cord injured in the country? Clinical excellence, operational excellence, and nursing excellence are the 3 main drivers of equality in any modern healthcare organization. While patient satisfaction is the outcome of the quality which is given to any patient in healthcare organization. At ISIC, when we talk about clinical excellence, it is about delivering evidence-based healthcare medicine through highly trained healthcare professionals. At ISIC, we have one of the largest team of spine surgeons which are abreast to the world-class standards of spine care.
Apart from that, it is backed up by the technology which is top of the line and comparable to anywhere in the world standards, including robotics. Robotics is something which is precision based, and it definitely gives an edge over any kind of a conventional surgery which is done in the spine. Apart from robotics, we also have 8 modern OTs which are modular and it is ensured that the patients are taken up with standardized protocols, keeping in mind the patient safeties as per WHO protocols. Apart from this, academics is a very integral part of our clinical excellence. We have DNB in orthopedics and spine, and I'm sure that this education system in our hospital adds a lot of value in terms of upgrading the learning and keeping ourselves abreast with the advancements all over the world. There is a lot of focus on research work as well, which is related to spine. When we talk about operational excellence at ISIC, there is a continuous effort in improving the quality in terms of processes, in terms of systems. And when we are talking about systems, there's a lot of advancement which we have done related to IT, information technology, which has been integrated with our systems. And it has helped not only the clinicians, but also the patients, so that the care which is given across IPD or OPD, which is seamless. I'm also happy to share that ISIC is NABH accredited. We also have certification in nursing excellence from NABH. When we are talking about automation, there's a lot of role of automation in patient satisfaction, because ultimately all these three things are intertwined. If like for example, operational excellence supports clinicians and the nurses to provide the best of the clinical care, and if the clinical care is good, it definitely fosters a lot of confidence among the patients and builds up trust and loyalty. We ensure that whenever a patient comes, the journey of the patients, whether it may be OPD or IPD, it is taken with compassion and care, and there is a seamless transaction at all patient touch points. So ultimately, the hospital which we are looking at, ISIC, going forward, it has to have a right mix of operational excellence, clinical excellence, and automation, which should keep on increasing our patient satisfaction and in turn the patient loyalty towards ISIC. Thanks. Thank you, sir. With all the accreditation, we speak of quality. ISIC is the second name of quality. Now, with this and the ever expansion, what is planned? So, my next question is to Sugandh ma'am, that what future plan we have of ISIC in terms of just not only on spinal cord injury care and outreach, but overall, what's the future plan in terms of medical care? Um, so since spinal injuries is a name, and that will never ever go away, spine and ortho will always remain at the heart of ISIC. So continuously evolving within that is one of our main endeavors, while also adding centers of excellence in nephrology, like I mentioned, cardiac sciences, maybe transplants down the line, so on and so forth. Um, but in terms of patient care and spinal cord injuries, there's still so much that can be done. So we're thinking of
adding post discharge calls, keeping up with our patients, ensuring that they're comfortable within their homes, maybe connecting them with doctors in case they do have any problems that come up. Uh, we also have regional clinics and we are expanding those as well. So we are trying our best to spread awareness and outreach of spinal cord injuries management through the team that we have here. And also, we have a new physiatrist who's joined on board who will be looking after the entire rehab journey once a patient is admitted for rehab or post surgery. So, these are small changes that will continue to help us evolve, and um, we already are internationally recognized in the work that we do in spinal cord. But at the end of the day, I think we are our own competition and we need to find ways and means to evolve within that. As far as falls prevention is concerned, and because the doctor spoke so much about first responders and how the patient should arrive finally to the hospital that he's going to be treated at, we had the DCP traffic police who had been our chief, and Dr. Ashish and I are planning on visiting him and thinking about training first responders in terms of PCR vans on how to deal with road traffic accidents. So hopefully lives will be impacted for the better. um, this is going to be one of our main CSR initiatives which we will take up this year given the theme of SCI. And besides that, we're also looking at CPR training. It's again something that many people are unaware of. So these are just initiatives which I want to put out there in the community to let people know that we are going the multi speciality direction. So while spinal injuries will always be there, there are also other things that we are planning on introducing, and these are just baby steps we are taking towards that journey, keeping our philosophy and foundation the way it was from day one. That's it. Thanks. Thank you, ma'am. That was very insightful. Teaching the first responders that will actually be preventing a lot many injuries before they come to us. Teaching CPR, it is CPR we'll be inculcating as a life skill, so that again gives a lot of prevention there. Now, we all know the doctors have given us, the spine surgeons have given us an excellent clinical outcome. We know the severity, we know the falls to be taken care, what precautions can be done. Now, once the injury is done, the surgical stabilization is done, the patient is stable. Next comes where we have to, as Dr. Neeraj said, that we are making it a holistic care. So the most important holistic care when we come forward is to the rehabilitation people. They make the professional to live the lives of the persons more livable, dignified, independent. So the word is independent. So so that independence, how we go with. So the first question I would like to have to Dr. Rachit. Sir, according to you, what are the must have, what are the most important components of a comprehensive rehab or a holistic rehab where we make them more independent? Uh, Thank you for the question, Dr. Shanti. Yeah, thank you for the question. So rehabilitation, after obviously the patient has been stabilized, forms the heartbeat of the recovery of patient, obviously. As they say, good spine surgery saves lives, but good quality rehabilitation changes that saved life and make that patient much more productive to the family, to the society, and to the country as a whole. Uh, Rehabilitation is a marathon, it's not a sprint. And for that marathon, there will be various levels when the speed has to be accelerated, various levels when you have to take a step back, look at how things are going on. And for that, we need a team, and there are many components that are required to make sure that the rehabilitation is holistic, comprehensive,
multidisciplinary, multimodal. Starting from medical leadership of a physiatrist, it is very important that the patient's goals are planned. Patient's goal planning is very important. Caregivers goal planning is the goal planning has to be done with the caregivers as well, and for that a physiatrist to be on the board is very important for a comprehensive rehabilitation to take place, and also managing the complications and comorbidities. Mm, Second comes the physiotherapy part, which, as they say, movement is medicine, and it is very important for comprehensive rehabilitation to take place, and there a physical therapy plays a paramount role. Occupational therapy, obviously रोजमर्रा के काम जो patient कर रहे हैं, activities of daily living, that has to be seen. Adaptive equipments that the patient use, the home modifications, and for that occupational therapists play a big role. Orthosis and prosthesis, that is an overlooked component of comprehensive rehabilitation, but use of braces, use of splints, use of wheelchair, uh, so orthosis processes has a very important role when you talk about comprehensive rehabilitation. Psychological counseling, a spinal cord injured patient doesn't only need a wheelchair, he or she needs a wheelchair as well, and for that a good quality psychological counseling, peer counseling plays an important role. Nutrition and nursing, body needs fuel, body needs ammunition for a successful rehabilitation to take place. Assistive devices, assistive technology, I'm proud to say that Indian Spinal Injury Center is one of the pioneer centers in the country where technology meets innovation, and innovation is given to the patients. We have one of the biggest and the best assistive technology departments at ISIC, where we fabricate and provide training to all the wheelchair users. Vocational rehabilitation, as Dr. Neeraj talked about, it is very important that once a patient is stabilized and rehabilitated, patient has to be productive, and there vocational rehabilitation plays an important role, and so does the visceral rehabilitation. We often forget that spinal cord injury has an effect on body's viscera as well, be that bowel, be that bladder, and be that the sexual part, and for that visceral rehabilitation plays an important role. So rehabilitation needs to be holistic, and at Indian Spinal Injury Center we make sure patient is given a 360-degree rehabilitation service. Thank you, Dr. Rachit. Now, with this, as you said, holistic rehab, holistic care, I would say. So, my next question will be to our CNS ma'am, Jyoti ma'am. Ma'am, as you see in spinal cord injury, there are many a times the patients come to us or come to you as having bed sores. So, ma'am, how here we prioritize the bed sore management and how we do it as a prevention part of it? Thank you for the question. Yeah, bed sore. Like when the, it is one of the major complication when the patient is bedridden or when the patient is having limited movements from the bed. So, specifically when we take care of the bedside, we should ensure that the patient is having the frequent mobilization of the position. Like every second hourly positioning is very important. Taking care of the skin care is very important. The skin should be very clear, dry, and moisturized. And ensure that the pressure points are monitored on intervals, on frequent intervals, to ensure that the pressure points are taken care. And looking into the comfort devices, like we ensure that the air mattress, the cushions and the beds should not be with any wrinkles, so that it should be wrinkle free and friction free. And coming to the health and the nutrition and the hydration, ensure that the patient is getting high protein diet and added vitamins to the diet, or the diet to the patient, as well as we ensure that the adequate fluid balance is maintained for the patient. Then looking into the moisture, we should ensure that the patient doesn't have any incontinence or diarrhea or anything, and ensure that there is a barrier creams which are applied to the patients. And moving to a nutshell, we should ensure that the patient is friction free, maintaining the skin integrity appropriately, maintaining good nutrition to the patient, and controlling the moisture will prevent the pressure. So thank you. Thank you, ma'am.
As we are talking about holistic care, as Dr. Rachit also emphasized on the importance of sexual rehab. So my next question would be to Dr. Dinesh Suman. Sir, would you like to highlight the problems a spinal cord injured individual will get in the sexuality area, and is India ready or come to you with these questions? This is a perfect example of uh, the effect of social taboos, the myths, religious practices, and the cultural practices leading to a gross neglect of a very vital condition amongst our patients. All spinal cord injured patients tend to have skeletal problems, as Dr. Rachit had and spine team had pointed out. Rachit was very apt in saying they also have visceral problems with regard to their urinary bladder and bowel problems. These are also grossly neglected in our country. There have been surveys in various states, including the one in Karnataka in early 2012, where they said that only 2 to 5% of the people actually receive timely and appropriate rehab. There are less than a dozen rehab centers of magnitude and expertise available in a country with a population of 150 crore people, with a prevalence of about 1.5 million spinal cord injured patients and almost a similar number of 1.5 million of other neurological conditions, which all lead to the similar urological consequences. Indian Spinal Injury Center realized the importance of urological problems and their neglect in our country amongst our patients. We have been seeing it not only in the deprived sections of our community, we have not seen it only in the patients coming from far off, far flung rural areas or smaller cities. We have seen it in highly influential people, highly financially capable people, and people living in cities, because there is a dearth of knowledge and there is a serious lack of awareness, interest, and dedication towards the cause of spinal cord injury. Indian Spinal Injuries Center (ISIC) stands tall like an Everest in the field of SCI comprehensive rehabilitation in India and the whole of Southeast Asia. Beyond this, there are two centers of magnitude down south and very few centers serving the armed forces. Various other smaller centers are providing the basic rehab care, overlooking these visceral aspects of rehabilitation. We at Indian Spinal Injury Centers had developed a protocol based care which has served our patients very well. When we started off our journey about 30 years ago, we used to see a large number of complications due to serious neglect, lack of awareness, lack of guidance. And we are happy to note that patients who have stuck with us, patients who have followed up with us, patients who have been with us, we have been able to keep them healthy, happy, having a good quality of life. Urological problems in majority of these conditions are highly manageable and complications are highly preventable. So therefore, we urge that all sections of spinal cord injured patients must seek appropriate care from the experts, from the specialists who have sufficient experience in the management of spinal cord injured patients, and then follow up regularly. The treatment is long term, follow up is often lifelong. I am happy to state that patients whom we saw 30 years ago, 25 years ago, when they still visit us as hale and hearty, there is nothing more heartening to see. It will be gladdening for all of you to note that by the Second World War, Lord Patton, when he was injured, an American commander, he refused to be treated, saying that this is a ailment not to be treated. From that stage, in 75 years, we have come to a stage where patients with spinal cord injury can live as long as nearly a normal person, and the average longevity recorded
is about 32 years to 35 years on an average after spinal cord injury. There has been tremendous improvement. Urological causes, which once were the leading cause of morbidity and mortality in spinal cord injured patients, are now not even amongst the top 10 causes. Things have come a long way, and the treatment is very simple. Treatment requires not many gadgets, not many tests. What they require is a sense of awareness, education, and uh, ability to follow up with your treating physician regularly. Now, coming back to the question of sexual dysfunction, in India, sex is something very strangely taken. It's on everybody's mind. Everybody thinks about it all the time. Everybody sees it on the media all the time, but we don't talk about it openly in a socially acceptable and a professional manner. As a result, that there is a huge gap which lies between the patients and the treating physicians, treating team, as a result of which neither the patient is able to utter a word because he feels shy, he feels embarrassed to ask, and treating team dares not discuss for variety of reasons. Having come in touch with various people who visited us from the Western world, we've taken a lead, and at Indian Spinal Injury Center, we are happy to note that talking about sexual functions and helping people recover their sexual self, sexual identity, and zeal to life has been a standard part of our protocol for a very long time. We have established a specific division of urology, counseling, and supporting nurse in this area. Our whole team, including the spine surgeons, who not only render excellent spine surgeries but also are aware of all the other diverse needs of the patients, all our team of physiatry and physiotherapy, all our team of nursing, all our team of social workers are all sensitized towards multiple aspects of needs of our patients. And thus, wherever necessary, it's all brought out to the notice and patients are encouraged to go up and talk. We would also urge all the spinal cord injured patients, the families, the society to bridge a gap, bridge this gap by open communication, bridge this gap by being aware about it and talking about it. It's your right. Sexual health is an essential aspect of our well-being, and therefore it's imperative that we as treating physicians bring it to the notice and let the patient take up from there that help is available. And patients should also wake up to their rights and talk to their physicians about the needs which pertain to their sexuality. Sexuality in men can be restored with very simple means today. Sexuality in women can be restored with very simple guidance today. And fertility, the idea of having a family, idea of rearing children, idea of becoming good parents is something which is a absolutely perfectly realizable reality today in the spinal cord injured patients. We are happy to say that at Indian Spinal Injury Center, almost half a dozen people every year come and seek inquiries with regard to, shall we go ahead, form a relationship, or think of getting married? Yes, that is the answer to all our patients. A large number of our patients then talk to us about fertility, and every year many of them come back with a baby in their hands and sweets to make us feel good about that our patients have been blessed, and we have come a long way from the days of neglect to a fulfilling life among spinal cord injured patients. So the final concluding word is that urological health and sexual health is remains neglected in this country, but it is up to you, it is up to us to work together to make this a reality for all our patients. And Indian Spinal Injury Center is throwing up a SCI community, which we shall be launching very soon tomorrow. We would urge all of you to come and join us, where your concerns with regard to the education, awareness, the feasibility of treatment options, who are the treating people,
what are the various practical realities of it shall be brought to your notice, and together we shall be able to make the lives of SCI people not only healthy, happy, productive, and as good as the rest of the population. Thank you, Shambhavi ma'am. Thank you, sir. That was very insightful. Now, coming to one social taboo to the another one, my next question is for Ms. Prerna. We have been talking about spinal cord injured, their outcomes, and their psychological problems. Prerna, I would like to ask you, how many of the caregivers do come to you? Because there's a major problem of a caregiver burnt out. So, I mean, do they come to you, or do they just come with their issues relating to their main patient? It's a very good question. Thank you for this. So, what I have observed is very less caregivers come to me regarding their own concerns, and maximum of their concerns are for their husbands or wife or parents or children, and that's where I have to chip in and actually ask and address their concerns and burnout. So I do consider them together, and I do consider and ask them to come to me separately, because it's not just patient who are dealing with the change, but it's also the family, and everything gets a halt stop. It's like a pause. So in that pause, understanding, managing, thinking what will happen, what will go next, all of these stressors and other concerning relevant questions can be addressed, and it is very well worked together. So I have seen who has come to me and they have worked together and separately, and they have seen a very less, they feel very happy that okay, this 1 hour at least I feel stress free, a bit less burnt out. I feel that I had fun today, and also learn a lot of grounding and mindfulness techniques that do help him or them managing their own concerns. So yeah, it is like a roadway ahead that I'm working towards, but yes, it is a very indeed impromptu need of the hour. Thank you, Prerna. Yes, caregivers, we are Indians. Caregivers are also important. Now, next question is to Dr. Rimsha. Now, when you have, now you as an operational head, you look into patients, their caregivers, and then you have peer counseling. How do you integrate? What are the policy regarding the same? Okay, so thank you. I think it's a very important question, but I'll just take you a little further to it. I think अभी हमने जैसे discuss किया that spinal cord injury is a very complex pathology. When I say complex, I mean there are a lot of aspects to it. For example, there's a clinical aspect, there's a financial aspect to it, there's a vocational aspect, and there's community integration. So I see that there are a lot of stakeholders involved in the final outcome of the recovery. So when a lot of stakeholders are involved, you see that everybody know their job best. But when it comes to coordination, it is a very fine tuning. So, Dr. Rachit has very well mentioned that there is an assistive technology, there's a physiotherapist. So, let me take an example that a physiotherapist knows what to do with the muscle strength and balance training, but he doesn't know when to integrate with the assistive technology. So, operationally, it is very important to bring all of the stakeholders on one page so that they are well coordinated and the outcomes are achieved at the right time. As Dr. Das has already mentioned that time is of essence, and there is no timeline as per the protocol. It changes from person to person, candidate to candidate. So it is a very customized plan. Operationally, we have to coordinate a lot amongst the stakeholders so that we get the right outcomes and the patient is satisfied at the end of the day. So I think that's a bigger challenge, first of all. Second, you just asked me about the policy. So when a patient comes to us, he's not aware what are the privileges, what are his rights, and how can actually we contribute in that. Very important aspect is the financial aspect. So financial aspect, once the patient is also already drained out because of the treatment plans and hospitalization, the cost of
this whole treatment is exclusively high. So we have a lot of things to offer. What are the initiatives from the organization is there? What are the initiatives that from the government side we have? So coordinating all of this and offering this to a patient, you know, this is very important, and we do offer it at Indian Spinal Injury Center, because this is, I think, one of the biggest facility I've ever seen in the Asia, that has all the domains, and everybody is so well aligned with the spinal cord injury pathology that the outcomes are definitely better. So I think I'm able to answer your question in the limited time. Yeah. Yeah. Thank you, Dr. Thank you. Rimsha. Now, as we know, most of our spinal cord injured, they are on the wheelchair. They use wheelchair both for ambulation within the house as well as in community. So my next question is to Mr. Rajiv Virat. Sir, are we wheelchair friendly outside and inside, both? And does improper use of wheelchair would lead to falls, secondary to the injury? हेलो एवरीवन, मैं हिंदी में देना चाहूँगा इसका जवाब. एक्चुअली आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सारी बात को समझाया, लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या हम एक्सेसिबल हैं इनसाइड और आउटसाइड. वेल, दोनों ही जगह पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. इन वन वर्ड आई वुड से येस, वी आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड. एंड होम ऐसा लगता है, लेकिन कोई भी तैयारी करके व्हीलचेयर पर नहीं आता है. अगर मेरे घर की सीढ़ियाँ थी, मेरे घर का बाथरूम था, और अगर मुझे बाकी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे बितानी है, तो मुझे अपने घर की एक्सेसिबिलिटी को भी बदलना होता है. सो रेडिली अवेलेबल एक्सेसिबिलिटी नहीं है इंडोर, लेकिन एट ISIC वी हैव होम मॉडिफिकेशन सेक्शन ऑल्सो, तो हम वो सिखाते हैं. उसके अलावा आउटसाइड, देखिए मैं दिल्ली में हूँ और मुझे भी कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है. तो एज अ कंट्री, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, एक्चुअली एक बड़ी विचित्र बात यह है कि गांव एक्सेसिबल हैं हमारे, लेकिन हमारी मिड सिटीज़ एक्सेसिबल नहीं है. जो एकदम एंड स्पेक्ट्रम है, खुले देहात हैं, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है. लेकिन दफ्तरों में जहाँ नौकरी पर जाना है, जहाँ काम पर जाना है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी आज भी मौजूद नहीं है. इवन इन दिल्ली, आप खुद से पूछिए, आपने कितने लोग देखे होंगे बस स्टॉप्स पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं? शायद ही कोई ऐसा होगा. प्रोविजंस हैं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है. कुछ हमारे व्हीलचेयर यूजर्स की कमी है, लेकिन उनको वैसा एनकरेजमेंट पहले सिस्टम की तरफ से चाहिए कि वो बाहर आए. सो दैट इज माय आंसर. एंड राजीव, ये भी बताएं कि ये जो इम्प्रॉपर यूज, जो स्किल्स का यूज नहीं होता है, इससे क्या सेकेंडरी फॉल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम तो बिल्कुल नहीं होते हैं, बढ़ ही जाते हैं मैम. एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको कोई औजार दिया जाए और उसको चलाने का तरीका ना मालूम हो, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स विल, देयर इज अ सर्टेन चांस ऑफ फॉलिंग विद द इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ चेयर. कई बार हम लोगों को क्योंकि जैसा मैंने बोला, सब तैयारी करके नहीं आते हैं. व्हीलचेयर को लेके हमारी जो सोच और समझ है जनरल, हम सोचते हैं एक व्हीलचेयर एक पेशेंट को बैठ के दे दी जाएगी और एक कुर्सी है जिसमें पहिए हैं. लेकिन नहीं, एक व्हीलचेयर मेरे जीवन को सुगम, सरल और सफल बनाने का साधन है. सो अगर हम व्हीलचेयर स्किल्स, ISIC में व्हीलचेयर स्किल्स नहीं सिखाते हैं और आपको सिर्फ एक व्हीलचेयर दे दी जाती है जिसको आपको चलाना नहीं आता है, तो इट्स लाइक आई एम गिविंग यू अ कार बट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, सो यू विल absolutely end up in accidents. थैंक यू राजीव. फॉल्स को लेके now my next question will be to ज्योति मैम, हमारे CNS मैम. Many a times patients get discharged, and there's a good amount of time the patients are in touch with the nurses. So how does nurses contribute to the falls prevention education, so that these patients don't come back to us with secondary falls? Thank you for the question again. Yeah, the nurse plays a major role in the education of the patient on fall prevention, which is one of the important factor for the patient who are on wheelchair or in the bed. The nurse ensures that the education is given to the patient pertaining to the fall prevention, in the means of ensuring that she teaches about the side railings which is used for the patients,
at homes or in the wherever they travel or whatever it is, and ensure that the seat belt of the wheelchair is placed whenever they move from one place to another. And in the hospital, she ensures that their teaching is given to the family as well as the patient and the caregiver to ensure that the safety of the patient is maintained. And to do all those things, the first thing what she has to do is she has to do an initial risk assessment of the patient to identify whether the patient is, what is the age of the patient, the illness of the patient, the medication of the patient, whether the vision of the patient is appropriate or not, and if the patient has had any fall the previous fall before the admission of the hospital. And she ensures that the techniques of moving from the bed in and out is taught to the patient by demonstration. And she ensures that side railings are in place whenever the patient is in the bed, and when the patient mobilizes from the bed to other, she ensures that the body mechanism is maintained by the patient. And she ensures that the safety is taught to the patient, and there is no littering of items around the patient's area, and the hazardous materials on the safer side so that the patient doesn't get harm. And she ensures that the same thing is monitored after the teaching of the patient. She ensures that the patients are monitored pertaining to the practice, whether they are implementing it or not. So once that is monitored accordingly and encouraged accordingly, the patients are given the empowerment to maintain their own responsibility to ensure the safety is maintained by them. This significantly will reduce the fall. Thank you. Thank you, ma'am. That was very insightful. My next question is to Dr. Rachit. Everyone wants to know नया क्या है. So वही question sir, नया क्या है पुनर्वास योजनाओं में? Thank you for the question. Of course, see, gone are the days when rehab was just about hope. This is now full-blown technology-driven thing. It's not just exercise. It is where, as I previously mentioned, technology meeting the innovation. And spinal injury center mein, we have made sure that ISIC is in sync with the technology that's moving around. We make sure that all the rehabilitation that is given to the patient is technologically advanced but evidence based. That is very important. We need to understand the caveat. नया क्या है टेक्नोलॉजी में, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं. Some of them we are very shortly starting at Indian Spinal Injury Center. First of all is the AI and ML. They are the two hot words that are being used all around. कहीं की भी मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बिना गाड़ी आगे नहीं चल सकती है. तो AI based exoskeletons are something that are being widely used. AI based exoskeletons basically uses the artificial intelligence and makes the patient's body parts move which are not moving because of spinal injuries. तो इमेजिन कीजिए एक पेशेंट जो सालों से शायद खड़ा नहीं हो पाए हैं, वो चल पाएंगे अगर वो सोच रहे हैं कि मैं चलना चाह रहा हूं तो, या उनका एक्सोस्केलेटन उनको मूव करा देगा थ्रू वेरियस टेरेन्स, उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी, सपाट रास्ते पे भी. तो AI बेस्ड एक्सोस्केलेटन्स इज वन पार्ट ऑफ इट. स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स, ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो कि आ गया है, जो कि यूज़ हो रहा है. बहुत जल्दी हम ISIC में भी स्टार्ट करेंगे. ये एक वेरेबल स्टिमुलेटर्स होते हैं, कुछ इम्प्लांटेबल स्टिमुलेटर्स भी होते हैं, जो बेसिकली जो डोरमेंट नर्व्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ऐसी नसें जो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं, उन नसों को वापस से उजागर करता है, जिससे मूवमेंट अपना चालू होता है बॉडी का. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इमेजिन आपका माइंड, आपका ब्रेन एक स्मार्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है एंड आप जो सोच रहे हैं वैसा मूवमेंट हो रहा है या कंप्यूटर मूवमेंट करा रहा है. Not only the motor part of it, the sensory part of it is also taken care of by brain computer interface. तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सेंसरी पोर्शन भी चला जाता है, फीलिंग चली जाती है, वो फीलिंग्स भी वापस आती है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू. एंड लास्टली वर्चुअल रियलिटी VR.
we are planning to introduce, I'm proud to announce and use this forum to say that we are planning to introduce virtual reality based rehabilitation services very soon at Indian Spinal Injury Center. Imagine rehabilitation या exercise boring नहीं होगी, मज़ेदार होगी, interesting होएगी. Virtual reality, as we know, is an immersive technology. It is an engaging technology जिसके अंदर हमें एक मेटा क्वेस्ट लगा दिया जाता है और उसके थ्रू एक्सरसाइजेज होती हैं, बैलेंस ट्रेनिंग होती है, गेट ट्रेनिंग होती है, so you can well understand where the world is going. And as the world is moving ahead, our institute, our organization is moving ahead as well. Thank you, Dr. Achit, and looking forward to all this. Now, the next question is to Dr. Rimsha. How are we reaching to the masses showcasing these new initiatives? And please add on, you have more initiatives to add on to the rehab department. Okay, so how are we reaching out to masses? So digital media is one of the modes where we are trying to showcase what we are actually offering. And we are also having regional OPDs in which, you know, the doctors and clinicians from our sides, they are going to different two-tier cities to showcase what we are having and how built up we are when it comes to spinal cord injury. Second is, what are the initiatives? I believe that there are a lot of initiatives that we are taking here regularly, but one of the very important initiative that has recently been taken is employment of wheelchair candidates at Indian Spinal Injury Center. So मुझे लगता है कि financially independent करना after the recovery, after the rehab is done, it is also very important. So financial independent करने के लिए we provide vocational training. We tell them what are the opportunities that are there, where they can get financially independent, be the breadwinners of the family. And to start with, we have already started this initiative at Indian Spinal Injury Center. We have recruited wheelchair candidates, you know, at different levels, at different you know, different places at Indian Spinal Injury Center. So we are offering this. I think we should actually promote this so that different organization and government also should create more seats for them and make them more financially independent so that they can actually take over their life again. So thank you. Thank you, Rimsha. We had a very wonderful discussion from what is injury, how the prognostic effects are there, कैसे ठीक किया जाए, prevent कैसे किया जाए, falls की रोकथाम, almost हमने सारे aspects को cover किया है. Now, as all good things has to come to an end, so before we end, I would ask our CEO, Sir Dr. Chandra, to say a few words and then we close the session. As we are coming to the close, my message is that we should take care of our spine. And whatever which we have gathered, the information over here, it has had been very luminous. And all aspects of spine care had been discussed over here. A lot of information which has come out. I'm sure it's going to add a lot of value and learning to the people who have heard it. And I'm sure the theme for this year's spinal cord injury, as it was prevention of fall, people are going to take care. The organization and the community should take care. We have to ensure that the patients of spinal cord injury are given an atmosphere that is understanding, empathetic, and has accessible infrastructure for them to get aligned to the mainstream society. And if, lastly, I would say that in case if there is something which happens and the spine cord needs to be taken care of, Indian Spinal Injury Center is always there with a gamut of complete services starting from prevention till rehabilitation. Thank you. Thank you, sir, and thank you all the esteemed panelists to be part of this discussion. Thank you all.